Hello students, in this video we will learn about endoplasmic reticulum, which is one of the very important cell organelle. Now inside a cell, all the cell organelles are present in the cytoplasm. Cytoplasm क्या होता है? Cytoplasm is the fluid content inside the cell. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर के बीच में जो fluid content present होता है, that is called as cytoplasm, and all the specialized cell organelles they are present inside the cytoplasm. cytoplasm में अलग अलग cell organelle present होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, lysosomes, plastids, mitochondria, etc. So we'll be learning about some important cell organelles one by one. So we'll start with endoplasmic reticulum. Now, what are endoplasmic reticulum? Endoplasmic reticulum is a network of membrane bound tube. ये ट्यूब की तरह और शीट्स की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, ओके, चैनल लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. ओके, ये मैन्युफैक्चर और साथ में पैकेजिंग दोनों का काम करते हैं. सो लेट्स try to learn something about endoplasmic reticulum. So here you can see the structure of endoplasmic reticulum. So endoplasmic reticulum is of two types: smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. तो आप ये देख सकते हो that it is directly connected to the nucleus. ये nucleus के साथ connected है so that exchange of materials can take place easily. Now you can see these dot like structures, जहाँ पे these dot like structures are called as ribosomes, which are also called as the site of protein synthesis. ribosomes का काम ही है proteins synthesize करना, मतलब protein manufacture करना ना. So if on endoplasmic reticulum ribosomes are absent, then it is called as smooth endoplasmic reticulum. If ribosomes are present, then it is called as rough endoplasmic reticulum. Now here you can see, for example, in an animal cell, आप यहाँ देख सकते हो कि न्यूक्लियस के साइड में these are the channel like structure present. Here you can see there are no ribosomes present, so they are called as smooth endoplasmic reticulum, whereas here you can see some dotted structures are present, so they are ribosomes. Hence such endoplasmic reticulum are called as rough endoplasmic reticulum. Now एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है कि सिंथेसाइज करना लिपिड्स एंड प्रोटीन्स एंड देयर पैकेजिंग. नाउ फर्दर ये कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, अलग सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे. नाउ लेट अस ट्राई टू सी द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, सो हेयर वी नो दैट ऑन द सरफेस नो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम it generally mainly helps in the manufacture of fats and lipids. In vertebrates, the smooth endoplasmic reticulum also helps in detoxification of many poisons and drugs inside the livers. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है? इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, सो हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन्स. नाउ endoplasmic reticulum is synthesizing proteins and lipids. So these proteins and lipids, they help in building the cell membrane, and this process is called as membrane biogenesis. Now some proteins and lipids, they are also acting as enzymes and hormones inside the cell and carry out various cell functions. Now ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट्स अपीयरेंस इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, बट हमेशा ये एक नेटवर्क की तरह इट फॉर्म्स अ नेटवर्क लाइक सिस्टम. सो what are the functions? The endoplasmic reticulum, it helps as it serves as channels so that transport of materials can take place between the cytoplasm or
between the nucleus and the cytoplasm, इसीलिए ये nucleus से मतलब attached होते हैं, nucleus के पास ये attached होते हैं. तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, it also functions as a cytoplasmic framework, and it provides a surface for some of the biochemical activities inside the cell also. Hence we can see that ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, they play a very vital role inside the cell. Okay, so they are, again I am telling you, reminding you that smooth endoplasmic reticulum helps in the manufacture or synthesis of proteins and lipids, lipids and fats, whereas rough endoplasmic reticulum helps in the manufacturing or synthesizing of proteins. So this is about endoplasmic reticulum, which is very important cell organelle. Thank you students. I hope that endoplasmic reticulum is clear to you.